Hi viewers, welcome back to my channel. So finally I've made it to Canada in one piece and I'm delighted कि मैं ठीक ठाक पहुंच गया हूँ. And this video is part 2 of my trip from India to Canada via Egypt. Alright, so I got my RT-PCR. जैसे मैंने आपको last video में बताया था मेरा result आना था by noon and I got it by 3 and luckily the result was negative and उस report के ऊपर मेरा पासपोर्ट नंबर था एंड QR कोड भी था. So everything was in place. So I packed all my stuff, had my dinner and left for the airport by 9:30. Then I reached Cairo International Airport at around 10:30 and वहाँ पे I met the agent SOTC का जिनके साथ टाई अप था. एंड देन उसने मेरी एंट्री गेट पे जो एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी होती है वो करवाई एंड टुक मी डायरेक्टली टू द एयरलाइन चेक इन काउंटर्स विच इन माई केस वॉज एयर फ्रांस का चेक इन काउंटर. एंड वहाँ पे कोई रश नहीं था, मैं थोड़ा पहले पहुँचा था सो इट वॉज एम्प्टी. एंड बिफोर दे गेव मी माई बोर्डिंग पासिस उन्होंने मेरी RT-PCR रिपोर्ट चेक करी, उन्होंने मेरे से मेरी कॉलेज की एनरोलमेंट लेटर मांगी एंड पासपोर्ट मांगा. एंड आफ्टर प्रॉपरली वेरीफाइंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स उन्होंने तभी मेरे को मेरा बोर्डिंग पास दिया एंड दे ऑल्सो गेव मी एन इमिग्रेशन फॉर्म, छोटा सा होता है, वो दिया उन्होंने. आफ्टर गेटिंग माई बोर्डिंग पास मेरे एजेंट ने मुझे स्टेयर्स की तरफ, वहाँ पे एस्केलेटर्स हैं उसकी तरफ कहा जाने को एंड आफ्टर दैट ही लेफ्ट. And when I climbed up the stairs, there was a place where everybody was filling their immigration form. And after that, I walked into the queue of the immigration. Immigration में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, रश भी मॉडरेट था. 10-15 मिनट में उन्होंने मेरे से पासपोर्ट, बोर्डिंग पास एंड वो इमिग्रेशन फॉर्म मांगा ऑफिसर ने एंड स्टैम्प्ड माई पासपोर्ट एंड आई वॉज थ्रू इमिग्रेशन. आफ्टर दैट आई वॉकड टूवर्ड्स माई टर्मिनल. सो टर्मिनल एंटर करने से पहले ही देयर वॉज द सिक्योरिटी सेटअप, तो सिक्योरिटी हुई. इट वॉज स्मूथ एंड वंस आई क्रॉस्ड सिक्योरिटी आई वॉज इन टू द एयरपोर्ट. वहाँ ड्यूटी फ्री की शॉप्स हैं एंड कैफ़ेज़ वगैरह हैं. एंड रिमेंबर वन थिंग गाइज कि जो कायरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जो डिपार्चर वाला टर्मिनल है वहाँ पे उन्होंने बहुत ठंड करी होती है. AC वॉज एट फुल ब्लास्ट, जिधर मर्जी मैं बैठ जाऊँ मुझे ठंड लग रही थी. सो डू कैरी अ लाइट विंड चीटर टाइप की एक लाइट सी एक जैकेट. सो आई रीच्ड माई गेट प्रीटी अर्ली, सो खाली था एंड द एयरक्राफ्ट हैड ऑलरेडी अराइव्ड एंड द बोर्डिंग स्टार्टेड ऑन टाइम लकीली. एंड फ्लाइट काफ़ी भरी हुई थी, पूरे देयर वर नो एम्प्टी सीट्स. एंड फाइनली वी लेफ्ट Cairo and we reached Paris around 6:30 in the morning. The moment you deboard the plane and enter the terminal at Paris, वहाँ पे left side पे and right side पे दोनों तरफ इन्होंने screens लगाई हुई हैं जहाँ पे you can see your connecting flights and उनके timings plus वो किस gate से जाने वाली हैं. So based on that, my terminal was terminal 2E. एंड ऊपर मैं वहाँ से जब आगे निकला सो आई कुड रीड द साइंस ऑल अराउंड मी कि कौन सा टर्मिनल किस डायरेक्शन में है एंड आई सिंपली फॉलोड दोज साइंस. But in case you get confused and you're not able to get the sense of the direction, हर जगह airport staff होता है and you can give them your boarding pass and they'll scan your ticket and then they'll guide you कि यहाँ से आगे जाके लेफ़्ट ले लो, राइट ले लो. मेरा जो टर्मिनल 2E था it was away, so I had to take a shuttle. It's basically a train connecting two terminals, so I went into that. So that was also interesting. Anyway, then once I reached my terminal 2E, I climbed up the stairs, escalators the, and after that I reached security. So security पे काफ़ी rush था. The terminal was also pretty full, but I didn't face any problems या उन्होंने कोई fuss create नहीं करी. And I can easily say that this was one of the best airports I have ever visited. बहुत अच्छी shopping के लिए it's good and duty free वगैरह shops बहुत ही high end brands थे. So if you're interested you can shop around. And in my case I had 7 hours का layover, so I had a lot of time at my disposal. So I checked out the airport thoroughly. So while checking out the airport I discovered that there is a hotel called Hotelier at the airport where you can get a room
for a few hours, but उसके लिए मेरे को सिक्योरिटी दोबारा करनी पड़ती है, and I was not up for it. So I just tried to hunt for a lazy chair जहाँ पे मैं लेट के सो सकूँ, and finally I found a rest area. It was near gate number L36. So वहाँ पे प्रॉपर उन्होंने चेयर्स लगाई हुई थी अराउंड 10-12. वहाँ पे पीपल वर रेस्टिंग एंड आई लकीली फाउंड वन फॉर माई सेल्फ. एंड उधर मैं मस्त सोया 2-3 घंटे आराम से रेस्ट करी. एंड गाइज अगर आप ऐसे कर रहे हो तो 3-4 अलार्म ज़रूर लगा लेना कम से कम 2-1.5-2 घंटे पहले अपने बोर्डिंग टाइम से. सो आई रेस्टेड देयर फॉर अ वाइल एंड आफ्टर गेटिंग अप इट वॉज अ लॉन्ग वॉक. मैं एक एंड पे था, आई हैड टू वॉक ऑल द वे टू अनदर एंड. And once I reached there, I saw that बहुत लंबी line थी for boarding. And this flight was from Paris to Toronto. So they were checking all the documents. So उन्होंने फिर से मेरा passport मांगा, मेरा offer letter मांगा, मेरे से मेरा RT-PCR test मांगा. And in my case, I was a returning student to Canada. So I already had my study permit. तो उन्होंने study permit भी मांगा. Okay. So I thought of coming out कि बाहर आगे वीडियो बनाता हूँ बाकी की. So after checking my documents, हमें उन्होंने boarding के लिए allow किया. Our boarding was delayed by 30 minutes and after boarding उन्होंने हमें almost 1 hour तक plane में ही बिठाए रखा because the boarding was not complete because of that security thing which was happening. So उसकी वजह से pace of boarding was very slow. Anyway, finally we took off from Paris due to lot of lineup and a hold at the immigration and customs in Canada. उन्होंने हमें फिर से plane में बिठा के रखा for another 30-35 minutes. But finally they allowed us to deboard and deboard होते ही वहाँ पे Canadian border officers खड़े थे and they were asking for our passport and our reason to visit Canada. And after we cleared that, then there was a long walk towards the immigration. So before you enter immigration, there is this passport scanning machine which is down the stairs. So वहाँ पे क्या करना होता है, in that machine you have to put in your passport and it will click your picture and you have to fill up a pretty standard declaration form regarding the kind of things you are carrying into Canada. एंड उसके बाद वो मशीन एक स्लिप प्रिंट करके देती है आपको विच देन यू हैव टू टेक इट टू द इमिग्रेशन वाले काउंटर. एंड इमिग्रेशन पे फिर इट वाज अगेन pretty standard immigration process. And also as I was a returning student to Canada, so they asked for my study permit, RT-PCR report which I got from Egypt, my passport obviously, and the ArriveCan app का screenshot. So they asked for everything. And इसके अलावा दैट लेडी वॉज काइंड, उन्होंने मेरे से कुछ ज़्यादा इंटेरोगेशन नहीं करी. सो बेसिकली आई हैव गॉट कोवैक्सीन एंड सिंस कोवैक्सीन इज़ नॉट अप्रूव्ड इन कैनेडा, उन्होंने मुझे अनवैक्सीनेटेड माना एंड द ऑफिसर said that I'll have to do a quarantine, for which I was obviously prepared. I had already done my Airbnb booking for 14 days. After all that, I went towards the exit and exit पे they were again checking the passport. So जो लोग fully vaccinated travelers हैं उनके passport पे immigration officers sticker लगा देते हैं green color का. But since my passport didn't have a sticker, उन्होंने मुझे अलग line में डाला जहाँ पे a COVID test was done at the airport. And COVID test के लिए you had to register on this app called Switch Health. ऐप पे रजिस्टर कर लो या वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर लो. एंड आफ्टर दैट there were all Indian international students sitting who were managing the entire process and I was so happy to see that. Anyway, उन्होंने मेरा नाम वगैरह मांगा, पासपोर्ट मांगा and they printed a slip plus they gave me a COVID test packet. So वो पैकेट लेके उन्होंने मुझे बोला टू गो टूवर्ड्स द काउंटर्स. वहाँ पे ना छोटे छोटे कैबिन्स बनाए हुए थे उन्होंने. सो दे टोल्ड मी टू गो देयर एंड गेट माई सेल्फ टेस्टेड. एंड आफ्टर द टेस्ट दे सेंट मी टू अनदर काउंटर जहाँ से आई गॉट माई होम कोविड टेस्टिंग किट. I'll tell you more about that in another video. So I got that box and once they told me to go, I called my Uber and the Uber guy came. उसके बाद it was ride back to my Airbnb where I am currently sitting. and जब मैं आया था शाम को तो मेरा वेलकम बहुत अच्छे से हुआ, बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हुई. So this concludes my trip
to Canada, finally making it here in one piece. I hope इस सब इंफॉर्मेशन से आपकी कोई ना कोई हेल्प ज़रूर हुई होगी. एंड आपको अगर कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी और एडिशनल आप पूछना चाहते हो, प्लीज़ फील फ्री टू leave your questions in the comments, or you can reach me out on Instagram at shortbymainee and slide in a DM, and I'll try my best to help you out. Alright viewers, thank you so much for watching this video by giving me your time. I hope it was worth it for you. If yes, then please do like, share and subscribe to my channel, and I'll see you in the next one. Bye bye.